इवनिंग स्टूडेंट्स। अच्छा, ये असाइनमेंट नंबर 1 का छोटा सा डिस्कशन। I thought I must do this for the benefit of many students who are not very particularly confident about trigonometry. ठीक है? Question number 1, first and second I'm leaving it. First and second I'm not talking about. They were basically values that you had to substitute and get to the answer. First का third part में you all have been asked to get the value of cos pi by 4. Cos pi by 4 1 by root 2 upon sec pi by 6 plus cosec pi by 6. Sec pi by 6 2 by root 3 plus cosec pi by 6 2. Cos pi by 6, cos 30 is root 3 by 2. So sec will be ulta 2 by root 3. Sin pi by 6 is 1 by 2. So cosec pi by 6 is ulta 2. Okay, and now you all need to simplify this. अच्छा, इसका सिंप्लीफिकेशन में काफी लोगों ने काफी गलती की है. ओके, जस्ट नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन which I don't expect anyone to make a mistake in. वैसे भी जगह पे लोगों ने मिस्टेक की है. ओके, सो दिस आई अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इसका सिंप्लीफिकेशन करते वक्त शायद कुछ लोगों को थोड़ा दिखने में अलग आंसर आया एज कंपेयर टू व्हाट आई हैव गिवन यू ऑल इन द आंसर की. ओके, बट आई थिंक I have taken that for granted and said, okay, that is also a part of the answer. The answer looks different, but it is the same. Okay, so here I think I would have said 1 by root 2. ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से बोल रहा हूं मैं और कुछ नहीं. Okay, then this will be 2 plus 2 root 3 upon root 3. Upon root 3. Okay, अच्छा, ये root 3 जाएगा न्यूमरेटर में. Denominator of the denominator means numerator. So this will be root 3 by root 2, and this will be in the denominator only. So it will be 2 into 1 plus root 3. अगर किसी ने भी यहाँ तक लाके छोड़ दिया है तभी मैंने I have accepted as an answer. I would have been happier had you rationalized this. Rationalized. What is the rationalizing factor of 1 plus root 3? 1 plus root 3 का rationalizing factor is 1 minus root 3. So multiply divided by 1 minus root 3. If you multiply divided by 1 minus root 3, this will become root 3 upon root 2. Okay, and I will get 1 upon 2 into a plus b, a minus b is a square minus b square, है ना? And 1 minus root 3 will come here, 1 minus root 3. Okay, done. And if all you have to get to the answer that I have mentioned, ये root 2 को भी rationalize करना है, आप multiply divide by root 2 कर लेना, multiply divide by root 2 कर लेना, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? root 2 is 2, 4 and minus 2, that's minus 8, and this will be root 2 root 3 into 1 is root 6, and root 2 root 3 root 3 is 3 root 2. इसको उल्टा कर दो तो 3 root 2 minus root 6 upon 8 आएगा. That should be the answer for the first question का third part. First question का third part. ठीक है? अच्छा, fourth part, इसमें all infinite students ask me, sir, pi by 12 मतलब कितना? Pi by 12 मतलब 15 डिग्री. तो वापस मैसेज, सर sin 15 और cos 15
नहीं पता, कैसे करें? बट यू नो व्हाट ऑल, I think I didn't want you to find out sin 15 at all. Do you observe that it is sin square 15 plus cos square 15? But we know that sin square theta plus cos square theta is 1, don't you? So your denominator here is 1 straight away. Okay, is 1 straight away. Identity. अगर मेरे को कहीं पर किधर भी सिंप्लीफाई करते वक्त sec square theta minus tan square theta आया तो मैं 1 लिखेगा, मैं थीटा क्या है देखने ही नहीं, because it's an identity. cosec square theta minus cos square theta is 1, so थीटा कुछ भी हो 1 होगा. cos square theta plus sin square theta दिखा तो थीटा देखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट 1 लिखो. ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को ये 1 है ये नहीं समझ में आया. ओके, अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पाई बाई 12 इज हाफ ऑफ पाई बाई 6, पाई बाई 6 का आधा है ना पाई बाई 12, तो पाई बाई 6 का क्या वैल्यू है? साइन पाई बाई 6, साइन 30 हाफ, तो उसका आधा लिया है. दैट इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल ऑलवेज. ओके, दैट इज नॉट एप्लीकेबल. इन अ फ्यू लेक्चर्स टाइम you will get to know what is the formula that's applicable. Are you getting that clear? Okay, probably in the coming lecture you all will get to know sin 15 cos 15 कैसे ढूंढने के, but अभी इस वक्त मैं नहीं डिस्कस करेगा. I think you all are expected to write that as 1 and बाकी का numerator you can write that, simplify, get to the answer. ठीक है? Then all, अच्छा, all those who haven't got the solutions of solutions of certain problems that I am discussing here, please ensure that you write it down in the notebook. Okay, right? जो मैं लिख रहा हूँ आपको भी लिखना चाहिए. Okay, अच्छा, next question number 2. Question number 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में tan x and cos x दिया हुआ है. अच्छा, एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड आर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल. नाउ फर्स्ट वाले में tan x is given as -12/5 and cos x is given as pi/13. Now everyone, when tan x and cos x both are given and you all are asked for sin x, okay, understand that this is not a problem where they are wanting you to use identity. This is a problem where they are wanting you to use tan x is equal to sin x by cos x. So I understand all, if you write tan x is equal to sin x by cos x, then I can directly say therefore tan x into cos x is sin x. The dot means into, all good. So sin x is equal to tan x into cos x. That's what this means. And you all have to simply substitute both the values here. Sin x, sin x. Identity लिखोगे, then all you all are only increasing the time span for solving the problem. हम लोग को उसमें जाना ही नहीं है. Please understand, everyone, this assignment was fundamentally based on the formula that we've talked about in class that day. First 2 lectures. Primarily the first lecture. Okay, you all have to know that tan x is sin x upon cos x. और कोई ऑप्शन ही नहीं. And don't think of whenever you are given 2 ratios, I think you all can use basic formulae. Identities तक जाने की जरूरत नहीं है. Identities करते वक्त please remember square form में. So when you take square root, प्लस या माइनस लेना है ये ध्यान में रखना चाहिए. Okay? अच्छा. So now this is in the first case. And second case में cos and cot दिए,
So obviously again cot x is cos x upon sin x, and you all are asked for the value of cosec x. Sin x निकाल के उल्टा करना. I think that's fair. That's possible with all of you all. Okay. Please note, first and second में you all are supposed to use not identities but direct relations and get the answer. Okay. Third, fourth, fifth, they were all based on identity. Third, fourth, and fifth, all based on identity. And everyone, identity solve करते वक्त, okay. I had also mentioned to you all when we did the lecture, everyone, second lecture में, where we solved problems. I think I mentioned it to you that identities लेके solve करो, चलेगा. But the faster one will definitely be triangle method. बोला था कि नहीं? Okay. Some of you all have followed that. Okay. And I could see that your answer was there in one step. Identities जो लोगों ने किया है absolutely correct है वो, लेकिन time span अपने को ज़्यादा लगता है when you do identity. Everyone, please take note of this. Okay. Say for example, अगर मैं होता, okay, I would have been solving ये वाला टर्म sin theta is 12 by 37. तो मैं तो डायरेक्टली इसको ऐसे लिखता, ऐसे थीटा, okay, 12 and 37. Now if you evaluate it, this will turn out to be 35, everyone. 35. And therefore cos theta is equal to अच्छा, please note. Now this is the reason why I specifically middle वाले के लिए, fourth वाले के लिए मैंने लिखा है theta is acute. That means actually all right angle triangle is possible only for what? The fourth problem. Fourth problem में क्योंकि theta is acute, आप right angle triangle actually draw कर सकते हो. थर्ड और फिफ्थ में राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअली ड्रॉ करना नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा मैनिपुलेट करके आंसर फटाफट लाने के लिए ये करना चाहिए. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन दे से sin theta is 12 by 37. Okay, remember a value 12 by 37 is possible for an acute angle theta, but you know sin theta is positive in the second quadrant also. Second quadrant also sin theta is positive. Alright, there is another angle theta in the second quadrant for which sin theta is 12 by 37. But in the second quadrant cos is negative. Which means when you write cos theta का answer for the third question, 35 by 12 तो आप लिखोगे ही, adjacent upon opposite, उसके साथ plus acute angle के लिए and second quadrant में angle के लिए minus. So answer has to be plus or minus 35. Okay. अगर मैं fourth वाला देखूं, okay, इसका fourth वाला देखूं, then I have been given that I have been given tan theta is. I have been given tan theta is √3 by √5, which is absolutely fine. √3 by √5. And I can draw the right angle triangle. I can draw the right angle triangle and say this is √3, √5, and now this must be √8. √8. So sin theta will be, because theta is acute is already given to me, opposite upon hypotenuse. और कुछ लोगों ने √3 upon √8 को 2√2 लिखा है, और कुछ लोगों ने इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको रैशनलाइज करने के हिसाब से 4 आ गया एंड √6 by 4 में लिखा है. They are all fine, absolutely fine, no problem. Please understand everyone, अगर ये मैंने दिया है और cot theta निकालना है, okay, then by identities method you all have got option of sin theta से cos theta निकालो. sin square plus cos square is 1. एक बार cos theta का वैल्यू आया, that is in plus minus form, because you have to take square roots, no, so plus minus form में होगा cos upon sin, and that is given the answer. या फिर
ध्यान दो एवरीवन, या फिर साइन थीटा में से कोसेक थीटा निकालो एंड देन से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1 एंड thereby get complete. Is that very clear everyone? So if theta is acute नहीं दिया है तो please understand, okay, then plus minus has to come when you are solve using the triangle method also, identity method also, whatever method, plus minus आना ही है. लेकिन अगर theta is acute दी दी है या स्पेसिफिकली अगर किसी ने कहा कि theta is in the second quadrant, मान लो इधर theta is in the second quadrant बोल दिया, then plus नहीं आएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि ये प्लस वाला किधर के लिए है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, माइनस वाला सेकंड क्वाड्रेंट के लिए था, सो माइनस ही आएगा आंसर. सो यू हैव टू लुक एट वेयर थीटा लाइज एंड दैट ऑल सिल्वर टी कप्स शुड बी अप्रोप्रिएटली टू गेट द आंसर. ठीक है, पक्का? देन ऑल नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 4 मैं बात नहीं कर रहा. I am not talking about them at all. I am not talking about them at all. Okay? I am directly moving to question number 5 of the third sub question. Question number 5 of the third sub question. अच्छा, everyone, थर्ड वाला क्वेश्चन में fifth one, okay, and it says 0 less than theta less than pi. What does this mean, Ray? What does this mean, all? This means that theta is acute. This means that theta is acute. Okay, theta acute है, तो all ratios are positive, आपको पता है, पक्का ना? Okay, and you all been given 5 cot theta equal to 3. अब cot theta equal to 3/5 लिखा है, बहुत लोगों ने लिखा है. Okay, many people have written this. Cot theta is equal to 3/5. Okay, and ये 3/5 लिखने के बाद बहुत लोगों ने ट्राइंगल भी ड्रॉ किया. ओके, एंड ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग व्हिच स्टूडेंट्स हैव डन. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, थीटा इज एक्यूट आ गया. ओके, ये आ गया, एंड यू नो cot theta 3/5. सो cot theta 3/5 मतलब 3 is adjacent, 5 is opposite. And I don't know for what reason, but hypotenuse is marked as 4. अच्छा, everyone, ये लेने के बावजूद लोगों को फाइनल आंसर करेक्ट भी आया. That is because, okay, this hypotenuse value na gets cancelled throughout, and that's why you still arrive at the same final answer. But जिस किसी ने भी ऐसे किया है, okay, I think that's a blunder. When you were doing your assignment, your head is not at the right position. Okay, it's not focusing at the work that you're doing. When one of the perpendicular sides of a right angle triangle is 5, hypotenuse cannot be less than 5. Hypotenuse has to be more than 5 for sure, because hypotenuse is the largest side of a right angle triangle. So the moment you see someone writes 4 here, an absolute blunder. Okay, the mind is thinking, okay, I know what the mind is thinking. The mind is thinking 3, 4 and 5 form a right angle triangle. 3, 4 and 5 are a Pythagorean triplet. 3 square plus 4 square is 5 square. So it forms a Pythagorean triplet. Pythagorean triplet ये है Pythagorean triplet. 3, 4 and 5. This is how it is. Not this.
That's a blunder. Okay, so all of y'all, please be careful. Okay, and जब आप sum solve करते हो, आपका 100% प्रॉब्लम पे होना चाहिए, ना कि इधर। Okay, so this is actually root of 3 square plus 5 square, which means it is root of 34. Root of 34. ठीक है? अब लोगों ने बहुत सारे वेज में सॉल्व किया है. ओके, दे हैव यूज्ड many ways to solve the problem. Okay, now I will tell you some of the things that students have actually done. Okay, first method to solve this sum. All right, what are you being asked to get? You are being asked to get 5 sin theta minus 3 cos theta upon okay 4 sin theta plus 3 cos theta Actually, everyone, the best way to have solved this sum is divide by sin theta. Divide by sin theta. थ्रू आउट बाय sin थीटा. तो इसको डिवाइड बाय sin थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा 5. इसको sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3 cot थीटा अपॉन इसको sin थीटा से डिवाइड किया 4 प्लस 3 cot थीटा एंड cot थीटा का वैल्यू आपको पता है. cot थीटा का वैल्यू इधर डालो एंड गेट द आंसर. दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. Are you getting that clear? Acha, now whatever I am discussing here is applicable for the next sum as well. Okay, because it's the same sum, except that instead of sin theta here and cos theta here, these two have reversed. Baki everything is the same. Half the students have written assignment के solution में 6th one is the same as 5th one. ओके, मैं क्या पागल है? एक ही प्रॉब्लम दो बार दूं तुम लोग को, वो भी बाजू में. हाँ, एवरीवन, ओके, प्लीज ऑब्जर्व द क्वेश्चन केयरफुली. अगर आप बराबर से क्वेश्चन ऑब्जर्व कर नहीं पाओगे तो बहुत सारे जगह पे मिस्टेक करोगे. शुड बी अवॉइडेड. ओके, अच्छा, ये मैंने कहा सबसे बेस्ट. सेकेंड वाले मतलब दूसरा वाला जहां पर cos थीटा एंड sin थीटा है इंटरचेंज, आपको इधर cos थीटा है तो इधर 5 आएगा एंड इधर -3 नहीं, इधर 5 cot थीटा आएगा. ये 6th वाले का है, 6th वाले का 5 cot थीटा -3 अपॉन 4 प्लस 3 cot थीटा. एंड क्या होगा अभी यहां पर cot थीटा का 3/5 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, 5 कैंसिल हो गए, 3 minus 3, आंसर 0 आएगा. The two are different answers, ना? Please, everyone, please take care of that. अच्छा, now some other things that students have done, and you all have to guard against doing that. ठीक है? उसमें first mistakes. cot थीटा लिखा, सो लोगों ने लिखा therefore cos थीटा अपॉन sin थीटा is 3 upon 5. Therefore cos theta is 3 and sin theta is 5. Utter rubbish. Everyone, when you say your ratio is 3/5, okay, please understand that these two don't have to be these numbers exactly. They can be multiples of 3 and 5. Okay, कुछ लोगों ने 3 और 5 नहीं लिया, कुछ लोगों ने लिखा therefore cos theta will be 3k and sin theta will be 5k. ये राइट है, ये रॉन्ग है. 3k and 5k were case that
constant of proportionality, constant of variation. Okay, where if you write cos theta upon sin theta is 3k upon 5k, k will get cancelled and you get the ratio value as 3/5. But अगर किसी ने लिखा cos theta is 3 and sin theta is 5, that is ultimate rubbish. Cos theta and sin theta के values lie between -1 and 1. याद है क्या तुम लोग को? ये मैंने स्पेसिफिकली तुम लोग को लिखाया था. cos theta is between -1 and 1, sin theta is between -1 and 1. cos theta का and sin theta का maximum value is 1, minimum value is -1. तो आपने कैसे लिखा ये 5 और ये 3? प्योर गड़बड़, बकवास. जिन लोगों ने 3k और 5k लेके फिर इधर सब्स्टिट्यूट किया है, चलेगा. ओके, क्योंकि फिर क्या होगा, सिंप्लीफाई करके सब के कैंसिल होगा एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. करेक्ट. सो दैट इज ओके. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, I hope all of you all are clear with how you all have to solve, what mistakes most of you all have done, which you all have to see to it that it is avoided. ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सब में. ओके, थीटा acute भी दिया हुआ है. So absolutely fine if you all are telling me that cos theta is acute, I will draw the right angle triangle and I will get the sin theta and cos theta values and then substitute. That is also okay. अब ये cos theta sin theta values निकाल के अगर आपको substitute करना है तो I understand cos theta from the triangle will be 3/√34 and sin theta will be 5/√34. ठीक है? अच्छा, ऐसे में आप इधर सब्स्टिट्यूट करते वक्त क्या होगा? 5 into 5/√34 minus 3 into 3/√34 बराबर अपॉन एवरीवन. ये गंदे गंदे टर्म्स आते हैं तो you don't have to get scared. Alright, carry on. It will get simplified. Okay, this will now become 4 into 5/√34 and plus 3 into 3/√34. तो ओवरऑल डू यू अंडरस्टैंड? ये √34 कॉमन डिनोमिनेटर होगा इधर एंड ये √34 इधर भी कॉमन डिनोमिनेटर होगा, तो √34 आपका कैंसिल हो जाएगा. एंड यू विल फाइनली एंड अप विद 5 5s are 25, 3 3s are 9, 25 minus 9 16 and 20 and 9 29, 16/29. ओके, सेकेंड वाले सम में ये उल्टा है, ये उधर गया और ये इधर आया, तो 5 3s are and 3 5s are, तो वो कैंसिल होकर 0 देगा एंड दैट विल बी फाइनल आंसर 0. ठीक है एवरीवन? ओके, अच्छा, yes, I think you all should quickly note this down please, all of you all quick.